ओके गाइस, फोर्थ काइंड ऑफ एडवर्ब होता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें बताते हैं कोई काम किस तरह किया जाता है, हाउ, किस तरह किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्लोली, फास्ट, वी डू समथिंग फास्ट, परफॉर्मिंग वेरी वेल, क्विकली, शी वॉक्स क्विकली, क्वाइट रॉन्ग, absolutely, lovingly, badly, carefully, suddenly, knowingly, willfully, etc. इस तरह के जो वर्ड हमें ये बताता है कि कोई काम किस तरह किया जा रहा है, तो वो हम क्या कहेंगे, उसको एडवर्ब्स ऑफ मैनर। फॉर एग्जांपल यूसेज इन द सेंटेंस, ही वॉकड फास्ट टू गेट टू स्कूल। फास्ट, किस तरह वो गया, fast. It means this word is telling us how the action took place. For example, he walked fast. Many answer, my answer was absolutely wrong. My answer was absolutely wrong. She performed well in the competition. She performed well in the competition. It means कोई भी word हो, for example हमारे word है quick, तो हम क्या करेंगे, इसको quickly लिख देंगे। मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में से, एडजेक्टिव जो वर्ड होता है उसमें से हम क्या करते हैं, आखिर में ly ऐड करके उसको क्या हम कर देते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्विक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लविंग, फॉर एग्जांपल बैड, फॉर एग्जांपल सडन, नोइंग, फॉर एग्जांपल विलफुल, विलफुली, केयरफुल, केयरफुली, केयरलेस, केयरलेसली। इस तरह के जो सारे एडजेक्टिव होते हैं उनको हम आखिर में ly लगा के एडवर्ब्स ऑफ मैनर में चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सारे तकरीबन जो भी लिखे हुए हैं वो सारे एडजेक्टिव थे, हमने ly लगा के उनको एडवर्ब में चेंज कर दिया। हैप्पी, अगर कोई भी एडजेक्टिव हो उसके आखिर में y हो, उस वर्ड के आखिर में, तो हम क्या करेंगे, उस y को कट करके उसमें क्या करेंगे, ILY ऐड करेंगे और उसको लिख देंगे हैप्पीली। जैसे कि ये वर्ड है हैप्पी, इसको हमने चेंज किया हैप्पीली में। सो नेक्स्ट द फिफ्थ काइंड ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हमें किसी भी काम की इंटेंसिटी के बारे में बताते हैं। एग्जांपल वेरी, टू, इनफ, एक्सट्रीमली, क्वाइट, ऑलमोस्ट। द यूसेज ऑफ दीज वर्ड्स इन द सेंटेंसेस, शी इज रनिंग वेरी फास्ट। The first is very fast adverb. Which adverb? Adverb of manner. The first is adverb of manner. The word used here, very, very is what the very is? Degree. Adverbs of degree. Very fast. It means very is telling us the intensity of an action. The adverb. For example, how running he was, very fast. Very. Is your coffee hot enough? Hot enough. The sentence is interrogative. Is your coffee hot enough? Enough. I will not clean your room too. I will not clean your room too. The two is adjective of degree here. The weather is extremely cold today. Extremely, the extremely is adverb of degree here. उसके अलावा to is also used in another way. For example, it's too hard to drink. It's too hard to drink, or you can say the coffee is too hard to drink. यहाँ पे जो टू है वो भी हमें क्या बता रहा है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। इट मींस इंटेंसिटी के बारे में बता रहा है। ओके गाइस, द लास्ट काइंड ऑफ एडवर्ब, कंजंक्टिव एडवर्ब, और वी कैन से सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब्स। कंजंक्टिंग एडवर्ब और सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब्स क्या होता है, कनेक्ट्स टू क्लॉजेस। ये टू क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं। इसमें इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, जैसे कि कंजक्शन होता है, कंजक्शन की तरह कंजंक्टिव एडवर्ब टू क्लासेस को कनेक्ट करते हैं, मगर ये सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब भी कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल
जिस फुकरे में, जिस भी सेंटेंस में, क्लास में अगर ये एडवर्ब यूज़ किया हुआ है तो लाजमी है कि उससे पहले कोई ना कोई क्लास ज़रूर आएगा। और इसका यूजेज क्या होता है, इसके एक रूल्स होते हैं, यूज़ करने के रूल्स। कौन से रूल्स होते हैं? अगर हमने थर्स यूज़ किया हुआ है कहीं पे तो लाजमी है कि हम उसके बाद कामा लगाएंगे। अगर हमने कोई भी कंजक्टिव एडवर्ब यूज़ किया है तो उसको हम कामा ज़रूर लगाएंगे, कामा ज़रूर कामा लगेगी। और उसका जो पहले वाला क्लास होगा उसको हम जब ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे हम सेमी कोलन लगाएंगे। सेमी कोलन, सेमी कोलन, डू यू नो व्हाट सेमी कोलन इज? पंक्चुएशन, सेमी कोलन, this is semicolon. So we will see in examples. The example is thus, therefore, in fact, indeed, instead, besides, hence, however, moreover, also, likewise, meanwhile, nevertheless, nonetheless, since, rather, then, still, otherwise, ये सारे और also ये सारे जो इसके examples हैं. So some of the examples we have used here. I told him, thus he knows. अच्छा, यहाँ पे थोड़ी आपको थोड़ा गौर करना होगा। I told him, the first clause ends here. I told him. When the first clause of the sentence ends here, we used semicolon here. Semicolon. After semicolon, we used subordinating adverb. And when we use subordinating adverb, we will use comma, and then we will write another clause. So you can see here. I told him, thus he knows. She planned to go to the circus. Instead, she went to the beach. The first clause is she planned to go to the circus. When the first clause ends, we will use semicolon. Then the subordinating adverb or conjunctive adverb. Instead, after using conjunctive adverb, we will use comma. Instead, she went to the beach. It was raining. It was raining. The first clause ends here. It was raining, and we will use semicolon, the punctuation mark semicolon. And nevertheless, when we have used nevertheless, we will use comma, because the nevertheless is subordinating adverb. When we will use subordinating adverb, we must use comma after that. We went to the party. It was raining. Nevertheless, we went to the party. He moved all the furniture. The first clause ends here, the word furniture. He moved all the furniture. Then, what is then? Then is subordinating adverb or conjunctive adverb. When we will use conjunctive adverb, we must use comma after that. Then he cleaned his room. He moved all the furniture. Then he cleaned his room. For example, we are using otherwise. You should wear warm clothes in the winter. The first clause ends here. You should wear warm clothes in the winter. Now we will use conjunctive adverb. Which conjunctive adverb? Otherwise, when we use the conjunctive adverb, we must use with it the comma. Otherwise, you will fall sick. Now see, otherwise you will fall sick. When we have used otherwise, the conjunctive adverb, it totally depends on the clause we have used before. Otherwise, because otherwise you will fall sick. Use you should wear warm clothes in the winter. Otherwise you will fall sick. So I hope you have understood very well the adverb, the usage of adverb. You have been taught